Okay, good morning to all of you. Welcome back to our channel, Science Vision by Anil Kamboj. Today, our topic is circular motion. As our motion chapter is going on, this is the last topic of our chapter. Now, what is the motion we have already studied about in the previous classes? In motion, for velocity, we can say velocity is always displacement per unit time, and the formula of speed is distance per unit time. As earlier we have studied about that, sorry, velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. Means velocity have a particular direction. Why? Because displacement has a particular direction. But speed, it does not have a particular direction because distance don't have a particular direction. So in vector, we have a particular direction, but in scalar, we don't have a particular direction. So now come back to the topic, circular motion. When any object move in the circular path, when any object moves in a circular path, then the motion consists by the object is circular motion. Then object is said to be in circular motion. For example, sun is there, earth is revolving around it. If we assume that it is moving in a circular orbit, let us say this is our earth. So now motion carried out by the earth in that circular orbit is called circular motion. One more example I will show you the circular motion. That's something like that. Let us say it is any object which is moving in that way. So now this is the example of the circular motion. So next proceed. Now our next topic is uniform circular motion. Uniform circular motion. What does mean by uniform? When an object moves with the uniform velocity, a uniform speed, then the motion is said to be uniform circular motion. When any object moves in a circular path, यहाँ पे ऐड कर दोगे with uniform velocity, then object is said to be in uniform circular motion. So as the speed of earth is constant throughout the motion of revolution, we can say that earth move around the sun in a uniform motion. Its speed is nearly equal to 1680 meter per second, something like that. Yeah, हाँ 1680 मीटर पर सेकेंड वेरीफाई कर लेना. इसी तरह की है कुछ इसकी स्पीड. So this is the example of the uniform circular motion. Now our question is, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक वेक्टर क्वांटिटी में आएगा? Whenever we'll take the velocity in uniform circular motion, does it will be vector or scalar? This is our first question. As already I have said you that let us assume that this planet is moving around the sun with the constant speed 1680 meter per second. Means when velocity is constant, it means no change in velocity. So what will be the value of acceleration? Does
Object moving with uniform circular motion have the acceleration. What is the formula of acceleration? We know that acceleration is change in velocity per unit time. Now, क्या velocity change हो रही है इस केस में? Is the velocity changing? As earlier we have said that it is moving with constant speed, yeah, constant velocity. Velocity is remaining constant, then there means no change in velocity. If there is no change in velocity, it means acceleration will be zero. मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। यही हमारा आज का टॉपिक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन जीरो क्यों नहीं होती। तो उससे पहले कुछ टर्म्स देखते हैं कि क्यों नहीं होती एक्सेलरेशन जीरो। और फर्स्टली सी द डायग्राम केयरफुली। Let us say that this object is moving in the circular motion with constant speed. अगेन मैं स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूं, विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। एज अर्लियर इन वेक्टर we have studied two things. It have a magnitude as well as direction. कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होएगा, एक उसकी डायरेक्शन होएगी। मैग्नीट्यूड मींस उसकी वैल्यू या फिर उसकी क्वांटिटी हम कह सकते हैं। एज आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दैट डायरेक्शन, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं? 10 न्यूटन टुवर्ड व्हाइट बोर्ड। So direction is given along with the magnitude. This is the magnitude, this is the direction. So such type of quantities are called vector. Now, if we have to find out the direction of velocity, in that case, इस पॉइंट पे अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, हाउ यू कैन फाइंड आउट? यू जस्ट हैव टू ड्रॉ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व्ड सरफेस को सिर्फ एक पॉइंट से टच करती हुई जाए। लेट अस से दिस इज एनी कर्व्ड सरफेस, आई हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। सो टेंजेंट लाइन इन दैट लाइन which will touch the surface only at a one point, it is said to be tangent. If I have to draw the tangent at that line, I'll draw the line to be like that, which will touch only that point. So this is the tangent at that point. In the same way, if I have to draw the tangent at that point, I will draw one line that will touch only at one point. Let us say it is that point. So this is called tangent. यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो टेंजेंट लाइन? सबसे पहले हमें टेंजेंट लाइन के बारे में पता होना चाहिए। नाउ इफ आई हैव टू लेट अस से दिस इज द मोशन ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट, सो फॉर ईच पॉइंट इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट velocity. The motion of the object consisting constant velocity means its magnitude is fixed. Magnitude is fixed. अभी हमने अर्थ की एग्जांपल ली थी, कितना था? 1680 मीटर पर सेकंड के साथ। अगर यहां पे देखूंगा तो भी वेलोसिटी इतनी है। इस पॉइंट पे चेक करेंगे, इस पॉइंट पे चेक करेंगे, इस पॉइंट पे चेक करेंगे एंड देन इस पॉइंट पे। ये चारों पॉइंट्स पे चेक करके देखेंगे। अगर मैं चारों पॉइंट की बात करूं, यहां पे इसकी वेलोसिटी है 1680 मीटर पर सेकंड। At that point, it is also 1680 meter per second. At that point, 1680 meter per second.
एंड 1680 मीटर पर सेकेंड। यही तो हमारी डेफिनेशन थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ with uniform velocity, then it is said to be uniform circular motion. Now my question is, what is the direction of velocity at that point? It is a curved surface. If we have to find out the direction, we have to draw a tangent line. So we'll draw the tangent line at that point. It should be something like that. So that is the direction of motion of that planet at that point. What should be its direction of velocity at that point? Again, we will draw a one tangent to this point, and this will show the direction in that way. And what about the this point? It will show it like that. इस पॉइंट पे जल्दी से दोनों पॉइंट पे आप इसकी डायरेक्शन निकालो। इन दोनों पॉइंट्स पे क्या डायरेक्शन रहने वाली है वेलोसिटी की? So that is the direction of velocity at every point. Now what we have seen, its magnitude is fixed, but its direction is changing at every point of its path. उसकी डायरेक्शन अपने पाथ के हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है. So can I say that now even constant velocity due to change in its direction it consists, it have some acceleration, it have some acceleration. अब क्यों एक्सरलेशन? एक्सरलेशन का फॉर्मूला अपन ने क्या राइट किया था? एक्सरलेशन का फॉर्मूला हमने क्या राइट किया था? एक्सरलेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मींस v माइनस यू डिवाइड बाय t. अब आप कहोगे सर अगर मैं इसको u मान लूं, इसको v मान लूं, तो ये तो दोनों ही 1680 माइनस 1680 डिवाइड बाय जितना भी टाइम लगा, लेट अस से 2 आवर्स, तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल बी जीरो. तो सर एक्सेलरेशन तो जीरो आ रही है. बट बेटे यहां पे हमने वेलोसिटी लिखा है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है जो हम मिस करके चल रहे हैं इस पॉइंट में. तो नो डाउट मैग्नीट्यूड फिक्स रह रहा है पर उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं रह रही. ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ इट हैव सम एक्सेलरेशन and that acceleration is known as the centripetal acceleration. अब हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है. यहां तक देख लो अगर किसी को कोई डाउट हो तो. ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इवन वेलोसिटी इज कांस्टेंट yet it have the acceleration. Why it have the acceleration? Because the direction of velocity is changing at every point. Due to change in direction object consists some acceleration inside it, and that acceleration is known as the centripetal acceleration. तो ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन. नाउ विल सी सम फॉर्मूलाज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी. As we know that velocity is equal to displacement per unit time, or we can say speed is equal to, अगर मैं अकेला मैग्नीट्यूड लेके चलूंगा तो वो स्पीड में आएगा, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन लेके चलूंगा तो वो वेलोसिटी में आएगा. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट
टाइम। अब हमारा केस क्या है, यहां से डिस्कस करते हैं इस केस को। लेट अस से इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए, नाउ इट स्टार्ट मूविंग and again reach back to the point A. Let us say R is the radius of this circle. Now, what is the total path moved by this object? Can we say that it is perimeter of the that circle? ये perimeter है उसका, यही path move किया उसने. So, what should be the value of perimeter? Perimeter will be 2 pi r. कितने टाइम में कवर किया? t टाइम में कवर किया. तो अगर मैंने स्पीड निकालनी हो, स्पीड क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा उसका? दैट इज 2 पाई आर. टाइम कितना लगा? टी. स्मॉल लिख लो या कैपिटल लिख लो, मैं स्मॉल के साथ ही लेके चलूंगा. तो ये उसकी स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा. नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी इन दैट केस? इस केस में वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट. कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? यहां से चला, घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ गया. यहां से चला, घूम घुमा के वापस उसी पॉइंट पे आ गया. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, जहां पे था वहां पे आ गया वापस. लेट अस से राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग देयर. मैं बिल्कुल इस पॉइंट के पास खड़ा हूं. मैं यहां से गया एंड अगेन आई कम बैक टू दिस पॉइंट. व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट? नो डिस्प्लेसमेंट बिकॉज आई कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. सो velocity is 0 upon time, that is 0. Velocity 0 क्यों हुई? Because net displacement is 0. नेट डिस्प्लेसमेंट 0 रही. अब मानते हैं हम एक नया केस, हाफ सर्कल ही कंप्लीट किया है. पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ओनली द हाफ सर्कल, सेमी सर्कल जिसको आप बोल देते हो. नाउ व्हाट शुड बी द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल? पूरे सर्कल का पेरीमीटर था 2 पाई आर. हाफ रह गया तो उसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? पाई आर. तो अब फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस कितना मूव किया? पाई आर. टाइम लगा उसको टी, इतना टी टाइम में उसने मूव किया, ये हम मान लेते हैं. नाउ व्हाट शुड बी द वेलोसिटी? इस केस में वेलोसिटी क्या रहने वाली है? डिस्प्लेसमेंट हुई अब कोई, ए से चला बी तक आया. नाउ व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट? Can I say that this is the displacement? The diameter of the circle, we can say it is its displacement, the diameter of the circle. तो कितना हो जाएगा डायमीटर? रेडियस आर है, डायमीटर कितना हो जाएगा? आर प्लस आर. आर ये रहा, आर इसके साथ वाला, दैट इज इक्वल टू 2r. तो वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 2r डिवाइड बाय टी. तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग पे आपको लेके चलना है. इसका थर्ड केस भी करवा देता हूं. मान लो ऑब्जेक्ट ने यहां तक ही मूव किया, हम यहां से कम कर देते हैं ये चीज. अब बताओ, इन दैट केस व्हाट शुड बी वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द स्पीड? तो फोर्थ पार्ट ही रह गया एक सर्कल का. तो टोटल पेरीमीटर था 2 पाई आर, उसका हम फोर्थ पार्ट ले लें, दैट इज पाई आर बाय 2. तो स्पीड कितनी रहने वाली है? पाई आर. यहां पे लिखता हूं दोबारा, स्पीड कितनी रहने वाली है? पाई आर बाय 2. नीचे उसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? टी से. सो दैट विल बी द फॉर्मूला व्हेन ओनली 1/4 ऑफ द circle is completed by a person. And what is in that case? Velocity. बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है. अब देखो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितनी हुई होगी? ए से चला बी तक गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुई है. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही? ये भी हमारे पास रेडियस है क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक है, ये भी रेडियस है हमारे तक. निकाल सकते हो आप ए बी की वैल्यू. लेट अस से इट इज ओ. तो पाइथागोरस लगाओ पहले, तो ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं. नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू ए बी, यही हुई हमारी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी बाय पाइथागोरस?
hypotenuse square AB square, that is equal to AO square plus OB square. AO square plus OB square, that is equal to R square plus R square, that is AB square. But we need only AB, so that square will be under root on that side. AB is equal to under root R square plus R square, or we can say AB is equal to 2R square का अंडर रूट, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2। आर स्क्वेयर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो गया तो आर बार आ गया रूट से, अंडर रूट 2R। तो वैल्यू फिल कर देते हैं यहाँ पे, अंडर रूट 2 आर रूट के बाहर है डिवाइड बाय टाइम, दैट इज द वेलोसिटी इन दैट केस। तो जब भी कोई ऐसा केस आ जाए, आप लोगों को वेलोसिटी इसी मेथड से फाइंड आउट करनी है जिस मेथड से मैंने अभी फाइंड आउट करके दिखाई है। तो ये था हमारा सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए इसी टॉपिक से रिलेटेड ही, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगेन इट इज रिलेटेड विद दिस। इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा आपको बता के जाऊंगा, तब तक आप इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेना ये वाले। लेट अस से वी आर गोइंग टू produce a uniform circular motion from this bottle. So now when it is moving, why it is not going outward at every point? As earlier I have said that at each point it have a direction. तो जिस डायरेक्शन पे छोड़ दूंगा ये उसी डायरेक्शन पे चला जाएगा। तो जिस डायरेक्शन पे छोड़ा ये उसी डायरेक्शन पे चला गया था, इस बार किसी अलग डायरेक्शन में छोड़ूंगा क्योंकि मैं तो रोटेट कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, इस बार इस पॉइंट पे छोड़ा तो वो इसके टेंजेंशियली चला गया यहां से। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसको बाहर कौन लेके जा रहा है, अंदर की तरफ किस फोर्स ने बाउंड करके रखा है? दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर, विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर।